my god, this is so beautiful. This view. Oh my god, the sun is coming out. It's beautiful. This hotel is so beautiful. This is the entry. I'm gonna close the door. Look at this wardrobe. Beautiful. The toilet. Okay, nice. And the room. Look at this beauty. Oh my goodness. I love the interior. I love it. This is beautiful. Oh wow. We have a welcome thingy over here. It's a cookie. And the best part is, whatever I drink, eat from here, whatever is there in the room, whatever. Oh, I have nothing down there. I was expecting too much. Whatever. Not this. Not the bed sheet. But this, everything is mine. I can have anything from here. Hi guys, welcome back to my channel. I am in one of the destinations which I didn't do this destination in a very long time. This is Zanzibar, and the last time we stayed in a different hotel, and I never did it ever since we got this beautiful hotel. Like, look at it, look at the interior. ये एकदम antique वाला vibe दे रहा है, and I love it. And the best part, let me show you. Let me show you guys. My goodness. At this view, oh my god, I can, oh, look at the clouds. Isn't that beautiful? I can sit over here all day. Wow. This is the entrance of the hotel, and the beach is on the other way. The beach is on the other side. Look at this. Isn't that beautiful? Wow. I love green everywhere. I love the beaches and I love the weather. It's so good. It's so good. I love the location. See, I went quiet. It just calms me down. Beautiful, isn't it? Okay, I'm gonna go inside now. Change. Crew का plan था that we all were supposed to go to Stone City and go to this beach restaurant. I didn't know the hotel is this beautiful, and it's just 24 hours over here. I have already seen that beach shack. I have had lunch, dinner over there. I don't know how many times. I think I'm gonna skip it. I think I'm gonna sit by the pool side. I think I'm gonna sit in the sun, watch the sunset, have food over here. Not gonna drink because I don't want to. Right now, the time is 6:50 in the morning. Zanzibar time. I'm gonna go to sleep and wake up at around like 1 o'clock. And then I will go to the pool side, which I showed in the other clip, I'm sure. Or I will put on the other clip. I don't know. I might sound a little bit tired right now because the sun is coming out. और मेरा और सन का डिवोर्स हो चुका है. हम दोनों एक दूसरे को नहीं भाते हैं. अगर भा जाए तो मतलब कुछ ठीक है, whatever. And अभी मैं सोऊंगी बहुत अच्छे से, and उठने के बाद we will go out and enjoy the sun. Look at the beach. Oh my god. Whenever I'm close to the ocean, the sea, whatever, I feel calm. Whenever I see this kind of greenery and beach and everything, कुछ तो हो जाता है मुझे, कुछ हो जाता है मुझे. I don't know. मुझे नींद आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. I love it. It brings me some kind of peace. और ये बेड भी तो देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है. हाय. चलो मैं सोने जा रही हूँ. Okay? I'll see you after I get up. Bye. Good morning. And it's the same day. अभी बज रहा है कुछ 2:30. I tried to wake up at like 1, but मुझसे नहीं हुआ.
So I woke up now. I wore my dress. The tan from Maldives is still there. Like it's literally, this light is there, and I'm thinking right now I'm gonna go to the pool, sit there. Oh my god, panda eyes. I'm gonna go to the pool and then we'll see. But right now I'm hungry. भूख लगी है बहुत गंदी वाली, और सोने का मन कर रहा है. I swear, झूठ नहीं बोलूंगी. रेडी हो चुकी हूँ. रेडी होके इस खूबसूरत सिटी के साथ जा रही हूँ मैं नीचे ठूसने के लिए. इतना खूबसूरत होटल है ये. हा. मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा धूप रहेगा तो और थोड़ा सा टैन बीन हो जाऊंगी मैं, बट मैं हुई नहीं टैन बीन. मैं अपने सीनियर के साथ आई हूँ इधर. इसका नाम है प्रिटी. वो बीच पूल के साइड में बैठी हुई थी, और इसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे. आई वांट टू क्लिक सम पिक्चर्स ऑफ हर. शी वांट्स टू क्लिक सम, आई डोंट नो व्हाट एम आई टॉकिंग. एंड उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे. दिस इज़ द व्यू. Look at it. It's beautiful. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ खींच लिए हैं. एंड लुक एट दिस. लुक एट दिस. ये क्या है? इतना लो टाइड है. यूजुअली यहाँ पे स्विम करने को मिलता है, बट इतना लो टाइड है कि पानी पता नहीं कहाँ तक चला गया है. These things are out. आई थिंक यही पकड़ के रखता है बीच को कि ये बह के कहीं ना निकल जाए. हाई टाइड नहीं है दोस्तों, इट्स लो टाइड. थोड़ा विटामिन डी. आई एम टेकिंग विटामिन डी. माय मम इज़ वेरी अपसेट दैट आई टुक टू मच विटामिन डी ऑन माय लास्ट लेओवर. कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गई थी मैं. तो इस बार मेरी माँ वापस ये देखेगी और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी. बट एनीवे, अब जो है सो है. एंड दुबई में ये इतना धूप, यू कैन इवन टेक इट बिकॉज बहुत अजीब सा है. बट हियर बीच के बाजू में, ओ माय गॉड, आई लव इट. जितना भी हमारा रंग और निखार दो, कोई बात नहीं. क्या बकवास कर रही हूँ मैं. बीच बहुत ही सही है. अभी हम लोग जाएंगे ऊपर. हम लोग कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे यहाँ पर. अभी हम ऊपर जाएंगे. जाने के बाद we'll order some food and then we will eat. ये कुछ बच्चे लोग हेलो बोल रहे हैं वहाँ से. यहाँ पे कोई भी हेलो बोलता है तो हेलो नहीं बोलने का. बहुत ही डेंजर लोग होते हैं. I'm just kidding. मैंने एक फूल लिया है. सोचो एक पिक्चर खींची. मैंने ऑर्डर कर दिया है खाना. राइस विच इज़ कुछ इंडोनेशियन चीज़ मैंने ऑर्डर किया है. उसके साथ मैंगो जूस. यू गोना सिट समवेयर देयर एंड ईट. मैं अपनी क्रू को दिखा भी नहीं रही हूँ बिकॉज इन माई लास्ट फ्लाइट आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस, जिसमें उसने बोला था कि शी इज़ ओके विथ मी रिकॉर्डिंग हर. और पूरा रिकॉर्डिंग होने के बाद उसने बोला नो आई एम नॉट ओके, कैन यू जस्ट क्रॉप मी आउट. एंड आई रियली डोंट नो हाउ टू ब्लर द फेस. तो इतना हिम्मत नहीं है मुझे, तो मैंने इनको पूछा ही नहीं. मैं अपना ही थोबड़ा बताऊँगी. एंड look at this, it's so pretty. जबकि मेरा स्किन इतना pretty नहीं है because I have got like whatever, but this is pretty. I'm hungry. Still waiting for the food क्योंकि यहाँ पे खाना आने के लिए टाइम लगता है. And I'm gonna have it. इसको लेने के लिए भी जान खराब हो रही है मेरी. देखो. It's so fresh. Mango. And my food is here. Got it. Oh my god, I love it. So I'm eating my food over here. And we have a cat. Hi, baby. She is. It's a he or a she? She's calling you, not me. You. Oh, come here. You. Come here. Go. I love the meow. It's like come here. So I'm eating. The cat is also eating with me.
The food is not the best. Do not order Indonesian food over here. I saw an Indian chef, and I think I'm gonna order Indian again because this much is not enough because we both are sharing. Say hi. Look at this, look at this, look at this. The chicken. Ow. No, she would have. What is this behavior? What is this nonsense behavior you just did? Huh? You don't bite my hand, okay? I'm feeding you. Look at the water. The water is literally till here. It was there. Now it's here. People are swimming. Beautiful. We are taking a walk right now, right outside the hotel, and I asked her, is it safe? It reminds me of the place I was born and raised, Difu, which is in northeast India. It's so similar because सारे झाड़ पेड़ सब कुछ सेम है. मैं जब यहाँ पे फ़ोन निकाल के चलती हूँ मुझे डर लगता है क्योंकि यहाँ पे कांड हो चुके हैं, तो मुझे अपने साथ कांड नहीं करवाना है. ये वीडियो अगर एंड में पोस्ट हो जाता है मतलब मेरे साथ कांड नहीं हुआ है. आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो. यहाँ पे सब आपको हाय बोलेंगे. ये मैं बता नहीं सकती क्यों, बट सब आपको हाय बोलेंगे. एनीवेज, अभी हम लोग चल के होटल की तरफ जा रहे हैं एंड देन मैं बालकनी में बैठ के चाय पीने वाली हूँ. चाय पी के नहा के सो जाऊँगी क्योंकि सुबह 2:55 का कॉल है और फिर 3:55 को हम निकल जाते हैं. इट्स अ अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. बट एनीवेज, आई विल सी यू इन द रूम. आ चुकी हूँ मैं अपने रूम में. इतना खूबसूरत रूम में आते ही एनर्जी बढ़ गया. एक्चुअली एनर्जी नहीं बढ़ गया, आजू बाजू में इतने लोग रहते हैं. आई डोंट लाइक इतना लाउड होके बात करना, नहीं तो बोलेंगे आ गई और ब्लॉगर. और ये मेरा बालकनी. मुझे डर लग रहा है बाहर जाके बैठने के लिए बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर मॉस्किटोज. और मैं अभी रेपलेंट वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ. मैं सोच रही हूँ अभी एक कप चाय पीऊँ और नहा लूँ एंड फिर जाके सो जाओ बिकॉज आई हैव टू गेट अप लाइक लिटरली मॉर्निंग नहीं, ये मिडनाइट वाली फ़्लाइट है लिटरली. अपडेट. मैं कुछ 9 बजे सो गई थी एंड मैं 11:30 बजे उठ गई और अभी मैं सो नहीं पा रही हूँ. मुझे भूख लग रही है तो मैंने प्रॉन करी और राइस मंगाया है और 2:55 का वेकअप कॉल है. ज़िंदगी ख़राब जैसी फीलिंग आ रही है. खा के वापस 1 घंटा सो जाऊंगी. भूख लग रही है. जब भी ये मॉर्निंग फ्लाइट होता है ना, बाल तो बहुत ही गंदे. जब भी ये मॉर्निंग फ्लाइट होता है ना तब ये नॉनसेंस हैज़ टू हैपन. आई विल गेट अप ऐसा और टाइम पर एंड देन आई कांट स्लीप एनी मोर. लाइक एवरी टाइम like what the hell. I even made the room so cold that I get sleep. But it's not about the room, it's not about this, it's about my tummy. I want food. Ganda level ka bhook lagne ke baad I ordered prawn curry, rice. I thought they're gonna send some salad or something. Nothing. I'm so hungry guys. I'm so hungry. क्यों आधी रात को भूख लगता है, क्या है? I'm gonna eat this, sleep for 1 more hour, get up, and then go on the flight. I don't have a proper camera angle because everything is packed in my bag there, and I'm not gonna unpack to show you. Ginna mat, okay. And it's yummy. I'm not kidding. This is so good. So if you're in Zanzibar, in this hotel, the crew members are Indian. I don't know about the others. I don't know about your taste thingy. But if you're Indian, Asian, order this.
order this prawn curry. Tell them to make it spicy, because at least it's not even spicy because it's made with coconut sauce, but it's tasty. Yeah. It's 2:20 and I'm up because I couldn't sleep, and I woke up at 11:30. I'm just gonna have chai now, and I'm not gonna have breakfast because I had dinner very late. So I'm just gonna get ready and go for the flight. My flight lands at 11:30 in the morning, and it's a long flight. Oh my god. Wish me luck. Let me get ready now. Okay guys, I'm ready to leave and go back to Dubai. I seriously miss my cats, especially Rooster. I'm biased. The male cat. I love him because he's my first cat. Anyways, my bags are packed. I just have to wear my jacket and then leave. Thank you so much for watching the whole vlog. I'm gonna put my Insta ID somewhere over here again. If you like, follow me over there, subscribe to my channel, like this video, and comment down below whatever you'd like me to talk about. The next video, or I don't know when am I gonna post that video. I'm gonna post some cabin crew like interview content and all that, but I'm not getting enough questions for that. Leave down your comments. Please don't ask like literally personal questions, Ki. You know what I mean. Whatever it is. Thank you once again, and I will see you guys in my next vlog. Bye bye from Zanzibar.